देखो Ma'am, there is a fact Asia. Ma'am, Asia covers 1/3 of the total land area of the earth. यस, ये देखो Ma'am, Asia is the largest continent. वेट, पहले इसको पढ़ो. एशिया इज द लार्जेस्ट, देन ट्रॉपिक Ma'am, ऑफ and it कैंसर. has the world's largest trench, which is Mariana Trench. हाँ, you people know Ma'am, very it's the good about deepest this point on topic. the earth. Ma'am, it's the deepest point on the earth of the height of 11,022 meters. ठीक है, चलो कॉन्टिनेंट्स के बारे में रीड करो. किसकी बारी है? पूर्णाश्री, आप रीड करो कॉन्टिनेंट्स. पूर्णाश्री रीड. देखो अब पढ़ो कॉन्टिनेंट्स के बारे में. अपने क्या हो गया आज इंटरनेट को? अच्छा, हैरी पॉटर वाला. एक मिनट बेटा, एक मिनट. आई वॉज इन अ स्लो इंटरनेट. मैं भी ज्वाइन थी. अभी देखो, अभी ठीक है. अभी ठीक है मेरा स्क्रीन? बेटर. It's a bit blurred now as well. अभी देखो. Yes, ma'am. अभी भी ठीक नहीं है. No, ma'am. Yes, ma'am. It's a little bit of blur. Little bit blur. वेट. अभी अभी कैसा है? आपके पास बुक है ना एवरीवन? What can I read? हाँ, आपके पास बुक है ना एवरीवन? Ma'am, you send me to read after Ira. ओके पूर्णाश्री, रीड कॉन्टिनेंट्स. Ma'am, it's hanging. Ma'am, your voice is not coming. क्या हो गया आज क्लास को? ये अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है. स्टार्ट रीडिंग कॉन्टिनेंट्स. स्टार्ट रीडिंग कॉन्टिनेंट्स. Dear, ma'am, you said for Nashri to read after हाँ Ira. पूर्णाश्री, रीड. Okay, ma'am. There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. Asia. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on figure 5.1. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. यूरेशिया. राइट दिस. यूरेशिया. बेटा लिखो इसको कॉपी में. यूरेशिया इज इक्वल टू यूरोप प्लस एशिया. यूरेशिया इज इक्वल टू यूरोप प्लस एशिया. यूरोप के बारे में पढ़ो. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound up by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. Africa. In the second largest continent after Asia, the equator or 0-degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn passes. The Sahara Desert, the world's largest hot desert located in Africa, the continent is bound on one side by
near the equator. The Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn passes in the map of Africa. दोनों ग्लोब दिखाएं. North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. You name these oceans? Can you name these South oceans? Africa. Just look on. How can I? Wait, beta. We'll name the oceans of the North America. Anybody knows the name of oceans? Anybody knows the name of the oceans? Ma'am, Ma'am, I know. ma'am, can I? बताओ. Ma'am, Atlantic and Pacific. Yes. Atlantic, Pacific and Arctic. आर्कटिक. अच्छा ये बताओ आर्कटिक एंड पैसिफिक किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? देयर इज अ स्ट्रेट. अभी आएगा नेक्स्ट पेज पे आएगा. Yes, ma'am. We'll read. Bering Strait. Can I continue reading? हाँ अभी कोई और पढ़े बेटा. Who is this? Who is this? Who is this? Ma'am, Arjun. अर्जुन read बेटा. Read South America. South America lies mostly in the southern hemisphere, with 2 oceans surrounded it on the east and the west. साउथ अमेरिका The के बताओ. Andes, वेट साउथ अमेरिका के ओशंस बताओ. Pacific, एंड अटलांटिक. देखो नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड में है नॉर्थ पैसिफिक एंड उसके दूसरी साइड है नॉर्थ अटलांटिक. ऐसे साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड में है साउथ पैसिफिक, मतलब एक साइड में है साउथ पैसिफिक एंड एक साइड है साउथ अटलांटिक. दोनों एक ही ओशंस है. नॉर्थ और साउथ का फ़र्क है बस. ठीक है, याद रखना. ma'am said me to read after. हाँ हाँ कोई बात नहीं. अर्जुन यू रीड. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप दूसरा बच्चा पढ़ लेना. साउथ अमेरिका पढ़ो बेटा. World's longest mountain range runs through its length from north to south. Figure 5.1. South America has the world's largest river, the Amazon. ये देखो एंडीज माउंटेन है. साउथ अमेरिका में कौन सा माउंटेन है? साउथ अमेरिका में कौन सा माउंटेन है? Andes. एंडीज माउंटेन. यूरल माउंटेन The कहाँ पर है? longest range of the world. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज. आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ. इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर इन योर ज्योग्राफी बुक. देखो साउथ अमेरिका में कौन सा है? एंडीज माउंटेन. एंड नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है? रॉकी माउंटेन है. एप्लेचियन माउंटेन. Yes, ma'am. माउंटेन्स रॉकी माउंटेन एंड एप्लेशियन माउंटेन्स. एंड साउथ अमेरिका में कौन सा है? Andes. एंड व्हाट इज इट इन एशिया? Himalayas. हिमालयस. ऑस्ट्रेलिया में एशिया का फेमस नहीं है एप्लेशियन. एंड एल्प्स माउंटेन इज ऑल्सो फेमस. इट्स देयर इन यूरोप. एल्प्स माउंटेन. Yes, ma'am. डिड यू सी? ओके. Yes, ma'am. अच्छा सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में है. In Africa. अफ्रीका में है. The largest hot desert. एंड राजस्थान की डेजर्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Ma'am, थार डेजर्ट. desert. और अफ्रीका के ऊपर कौन सा माउंटेन है ये? एटलस माउंटेन्स. Yes, ma'am. ठीक है. और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को कौन सा सी कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी. Ma'am, Mediterranean Sea. गुड. अच्छा लग रहा है. और सबसे ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन. और फिर यहाँ पर आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका Ma'am, को North America. क्या चीज़ कनेक्ट करती है? Ma'am, Isthmus of Panama. इस्थमस. वेरी Ma'am, नाइस. Isthmus of Panama. North America के Ma'am, एक it's side linked में- to Isthmus of Panama.
नॉर्थ अमेरिका के एक साइड है पैसिफिक, दूसरी साइड है अटलांटिक, And ma'am, this is Atlantic. ठीक है। साउथ अमेरिका के एक साइड है पैसिफिक, पैसिफिक इज राउंड इन शेप, यहाँ भी पैसिफिक है, यहाँ भी पैसिफिक है, ग्लोब में दिखाती हूँ Yes, अभी। एंड देन राइट साइड में क्या है, अटलांटिक। देखो पैसिफिक ओशन कैसे है, कितना ह्यूज है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है पूरा। कैन यू सी देर इज़ नो लैंड इन माई फोकस। मैं हल्का सा ग्लोब को घुमा रही हूँ तो मेरे को लैंड नज़र आ रही है। कैन यू सी, पूरा पूरा हाफ पोर्शन ऑफ अर्थ इज पैसिफिक ओशन। कैन यू सी, Yes, ma'am. फुल हाफ पोर्शन ऑफ पैसिफिक इज पैसिफिक। इट्स ग्रेट। चलो, who was reading Australia? Ma'am, can you please Ma'am, you said. Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? Australia, Ma'am, can I read? Ma'am, can I? बारी से पढ़ो। ओके, आई विल टेल यू, वेट, आई विल टेल यू, वेट बेटा। Ma'am, can I read? आयरा, यू हैव रेड। Ma'am, आर गर्ग आपने पढ़ लिया कि नहीं? Ma'am, मैंने नहीं पढ़ा. पढ़ो आप। उसके बाद मैम जो आज वाले आप नोट्स दिखा रहे थे कॉन्टिनेंट्स वाले, हाँ वो आप प्लीज ग्रुप पे भेज डाल सकते हो या दूँगी अभी बेटा। दिखा सकते हो? बड़ा, हाँ डाल दूँगी। Ma'am, can I read? थैंक यू। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ो, डोंट वेस्ट टाइम इन आस्किंग। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It's surrounded on all sides of the ocean and seas. It is called an island continent. Do you want to see Australia on globe? See, this is Australia. Ma'am, it's a country too. Can you see it's all surrounded by ocean? Ma'am, Australia has just one country. Ma'am, Australia. New Zealand is also included. Shari is Ma'am, telling that Australia New is Zealand very is big. also included. Ma'am, Australia is Ma'am, very big. Australia has 3 countries: Papua New Guinea, Australia, and there's another one. Or is it Ruchiramanpur? Okay, But good. ma'am, main country is Australia only. Okay, beta. Ma'am, Australia has many vacant houses. Ma'am, it's very less populated. Vacant houses you are telling. Yes, ma'am, it's very less populated. Okay. Still, so many Indians are moving to Australia. I've heard. Yes, ma'am. That's okay. Ma'am, my Australia. cousin lives in Australia. Very nice. You also go someday to visit him. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all. हाँ पढ़ो बेटा. It is ये इसके लिए बहुत छोटा सा दिया हुआ है। आइलैंड कॉन्टिनेंट होता है ये। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल किसी को याद है? कैंगरू। ठीक है। Ma'am, kangaroos. यस। अंटार्कटिका के बारे में पढ़ो। अंटार्कटिका में मेन हमें क्या पता होना चाहिए? Ma'am, Australia. Ma'am, there is an amazing fact about Antarctica. अंटार्कटिका के बारे में पढ़ो बेटा। Ma'am, every continent except Antarctica has McDonald's. अच्छा, गुड। Ma'am, Australia population, ma'am, is 27 million only. ओके, अंटार्कटिका के बारे में हु वाज रीडिंग? प्लीज रीड। Ma'am, can I? can you show your screen? ओके बेटा, प्लीज रीड बेटा। Ma'am, I read about Australia, but can I read about Antarctica too? नो। Ma'am, can I read? हाँ, यू रीड बेटा। हु इज आस्किंग? Ma'am, I have a fact regarding Australia. अभी वेट करो, अंटार्कटिका पढ़ो पहले। पढ़ो Yes, पढ़ो ma'am. पढ़ो, रीड इट बेटा। Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent, as it is located in the South Polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. They are named as Vetri and Dakshin दक्षिण Gotri. गंगोत्री। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये आपको सबको रीड करना है। देयर इज़ अ ब्लू बॉक्स हियर। एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड, एंड तेंजिंग नॉर्वे, शेरपा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है? Ma'am, 8,848 meters. यस। एंड ग्रेटेस्ट डेप्थ
यानी कि मैरियाना ट्रेंच। Ma'am, ये Mariana कहाँ पर है? Trench of 11,022 meters. वेरी नाइस, इट्स देयर इन पैसिफिक ओशन। ओके, Yes, ma'am. It's there in Pacific Ocean. Ma'am, it's very long. okay. So we read about continents today. There is something known Yes, as ma'am. lithosphere in this chapter. लिथोस्फीयर Yes, में क्या ma'am. होता है? बेसिकली सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। देन कम्स द Ma'am, it's the third कॉन्टिनेंट, layer of the atmosphere. देन इज द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर एज द नेम सजेस्ट इट मीन्स वाटर। हमने Yes, ma'am, कॉन्टिनेंट्स के ma'am. बारे में थोड़ा पढ़ा अभी। अभी ओशियंस के बारे में इसमें दिया हुआ है, ओशियंस पढ़ो। Ma'am, we read about, ma'am, Yuda means water. ओके, ओशियंस के बारे में पढ़ो। दृशा आप पढ़ो। Yes, ma'am. Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean waters are the waves, टाइड्स Tides एंड ओशन करंट। and the ocean currents. अच्छा, व्हाट प्रोड्यूसेस टाइड्स दृशा? Ma'am, the tides are like square waves. बेटा, टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पुल ऑफ द मून। टाइड्स, ये आप Yes, सब ma'am. होमवर्क में Ma'am, लिखो it's- प्लीज। Ma'am, रीड it's by अबाउट the pull of टाइड्स, the moon. पुल ऑफ द मून। ओके, द Ma'am, if फाइव the moon मेजर, will not exist, then the tides will not also not exist. Yes. And ma'am, moon make a control between the tides so that they cannot rise high. ओके। सो देयर आर 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक। पैसिफिक आई टोल्ड ना, बहुत बड़ा है। Ma'am, Pacific, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट, Atlantic, देन अटलांटिक, देन एज द नेम Ma'am, then सजेस्ट Indian. अराउंड इंडियन, यानी कि इंडिया Then, के ma'am. अराउंड सदर्न, एंड देन आर्कटिक। Yes, ma'am. अभी पढ़ो दूसरा, आगे पढ़ो। Ma'am, Indian Ocean is the only ocean named after a country. यस बेटा, पैसिफिक ओशन इज द, Ma'am, Pacific Ocean is the largest ocean, and ma'am, it's in the. I wanted to say that. दूसरा बोलो बोलो। The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. यस, The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, she wants to see the screen. Okay, who wants to read now? Ma'am, can I read? किसने नहीं पढ़ा अभी, वो बताओ पहले। अंगूरी, किसका आईडी है अंगूरी? बेटा आप पढ़ो। Ma'am, Atlantic Ocean is of S-shaped. हाँ, वेरी गुड। अंगूरी इज देयर। किसका आईडी है अंगूरी के नाम से? यू कैन रीड बेटा। Ma'am, I think she is not here. ओके, who wants to read? Please read बेटा। Ma'am, I want to read. You have read before? Yes, ma'am. अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ो बेटा। Okay, ma'am. Ma'am, from Pacific North Ocean and is almost circular in I'm shape. from Atlantic Ocean. हाँ, नहीं कोई नहीं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका सराउंड इट। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन पढ़ो। विल कंप्लीट द ओशन टुडे। हाँ, 3-4 ये जो पैराग्राफ्स हैं बस। The Atlantic Ocean is the second largest ocean in and South Americas on the western side, and Europe ocean is highly indented. Ma'am, what is meaning of indented? Indented, the coastline of Atlantic Ocean is highly indented. देखो इसने Ma'am, फोटोग्राफ भी दिया। this makes the ocean busiest ocean in the world. अच्छा, इंडेंटेड मतलब बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस हैं, उबड़ खाबड़ है बहुत ज़्यादा। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, देखो, ma'am. Yes, ma'am. इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस। इसका जो देखो राइट पोर्शन है, जैसे जो इसका राइट पोर्शन है डबलिन का, जो राइट जैसे यहाँ से है, ये इतना इंडेंटेड नहीं है। बट डू यू सी इतना इतना ज़्यादा इंडेंटेड है, ऐसे 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 करके जिगजैग है। सो ऐसे जिगजैग इसको बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। कोई नहीं। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. आगे पढ़ो।
This indented and irregular coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From Ma'am, can I read? From the point of view of commerce, it is the Busiest ocean. busiest ocean. देखो Ma'am, can I read? हाँ read करो. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bounded by Asia. In the west, by Africa, and in the east, by Australia. Very good. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. देखो मैं आपको ग्लोब पे दिखाती हूँ. It's there. ये Yes, ma'am. Arctic Ocean है. ये Arctic Ocean है North Pole पे. Everybody can see my screen. Yes, ma'am. And then Yes, ma'am. this is continuing to the Pacific Ocean. Can you see Pacific Ocean? How much it covers the Earth? 1/3 of Earth is covered by Pacific Ocean. Very nice. And it is in continuation with Arctic Ocean with this small line, Bering Strait. Bering Strait. Can you see? It's written on the globe as well. Ma'am, and India is linked by Sri Lanka by an Adams Bridge. ये Bering Strait. No, that's India and Sri Lanka, no? That's Bering Strait. No, it's written here. No, it's written here. Ma'am, India and Sri Lanka are connected by Adams Arctic Bridge. Ocean. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Bering Strait. Ma'am, in 2002, I went to Indira Point in south. Yes, Ma'am, I have from also been there, there. Vivekananda road, na? Ma'am, India is connected to Sri Lanka by from there I was able to see Sri Lanka. It was only 18 kilometers away from us. Ma'am, I also see Sri Lanka from place. Yes, good. Ma'am, I see Sri Lanka from Kanyakumari. Very nice, good. So Ma'am, can I read? बस अभी ख़त्म करते हैं इसको. एटमॉस्फेयर वाला हम बाद में करेंगे. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड मैम एटमॉस्फेयर. वेट बेटा, ये जी तक क्वेश्चन सब करेंगे अपनी कॉपी में. क्या मुझे आज लिख के दिखाओगे? यस मैम. ग्रुप में शेयर करोगे सब? एवरीबॉडी प्रॉमिस मी. यस मैम. ठीक है. करोगे ना बुक में से आंसर्स इसके ढूंढ के मुझे लिख के दिखाना. देन आवर क्लास विल बी सक्सेसफुल फॉर टुडे. Ma'am, I will send you the answers of the question. यस, बस मुझे इतना ही भेज देना A to G. बाकी के हम बाद में करेंगे. ठीक है. Ma'am, This chapter ma'am, was can you easy. please show the notes now? हाँ बेटा. I'll take just 1 minute. I need to complete those. I've just written from the book show only. Antarctica as well? I've just written from the book only बेटा. Ira. So Okay, ma'am. हाँ, it's from the book. कहीं और से नहीं लिखा. ये अंटार्कटिका है ग्रीशा. This white. साउथ पोल पे पूरा अंटार्कटिका है ये. तो नॉर्थ पोल पे क्या है? नॉर्थ पोल पे आइसलैंड वगैरह है. और ये जो अमेरिका Ma'am, है, and the नॉर्थ northern अमेरिका. hemisphere is also called the land hemisphere. ठीक है. क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ज़्यादा लैंड है ना. And Australia is the only continent which is lying in the completely in the southern hemisphere. Ma'am, also, ma'am, there are 2 continents, Australia and Antarctica. हाँ, Antarctica also. Very nice. ठीक है. Ma'am, does South America lie in the southern hemisphere or the northern hemisphere? South America, some part is there in northern also. देखो. Ma'am, and some part is in the northern hemisphere and some part is this in is the south. equator line बेटा. Grisha. This is equator line. So only this much part is there in northern hemisphere also. Can you see? Venezuela, Colombia,
एंड बीनीथ इट इज़ कंप्लीट इज साउथ अफ्रीका. ब्राज़ील के लोग भी काले काले होते हैं ना, निग्रोज होते हैं. रीड दिस चैप्टर. आसान है ये चैप्टर, मुश्किल नहीं है. मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड डू क्वेश्चन आंसर. ठीक है बेटा? Mom, I will send you the question answers. यस, सब बच्चे शेयर करना. आज मैंने वीडियो बनाई है, मे बी वॉइस आज आ जाए तो मे बी आई विल अपलोड द यूट्यूब लिंक, क्योंकि 25 मिनट्स का वीडियो है ना. हाँ बेटा. Mom, today's work you said that you have to make that little say that diagram. Mom, I am not. Actually I will not be able to send I you will today. share the video of today's class. Ma'am, actually I will not be able to share you the diagrams. You said that you have to draw, ma'am, because my mother is outside. So can I send you tomorrow? हाँ, कल भेज देना, नो प्रॉब्लम बेटा. Excuse me, ma'am. Have you checked my notes? Which one? Ma'am, I sent you नहीं, motion which and one? measurement and Yes, electricity. I saw that. It was good. You can improve. Make with pen mostly. Make with pen Ma'am, and my make. mother helped me with my sister's book. Okay. And make lot of diagrams. Whenever you make notes, na, make lot of diagrams, beta. It is always helpful. Okay. With Ma'am, this, can I tell word of the day? beta, abhi I am running late today. You can share in the group. We will do it tomorrow. Maybe Okay, tomorrow, not tomorrow, day after, Monday when we will meet. Okay, ma'am. Okay, Ma'am, beta? can I send it on the group? Yes, please send it. Please send it. I really like when you send it. Okay, bye. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Bye, ma'am.